वेलकम टू लेसन नंबर 85 दोस्तों। और आज हम बात करेंगे रीडिंग एंड वोकैबुलरी स्पोकन बाय प्रवीण वादलकर सोलो ट्रैवलर। व्हाई यू शुड टॉक टू स्ट्रेंजर्स। लेट मी टेक you to another place, Gokarna near Goa, a beautiful place. It was around 10 p.m. raining very heavily and it was too dark. Now struggling for the stay wherever I was going, they were saying, are you traveling alone? We don't give stay to those people who travel alone. Surprisingly, beyond my understanding, I am traveling alone, not with a girl. Come on, and then I reach one guest house. 4 rooms on the top, all four were locked. One uncle was sitting down wearing white color shirt. I assume that he is the owner of guest house. And before he said, no to me, I said, Uncle, why they are not giving stay to those who are traveling alone? And he said, continue lesson number 86. मैं अपलोड कर चुका हूँ लेसन नंबर 86, तो लेसन नंबर 86 आप जाके देख सकते हैं। वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है रेकलेसली वेस्टफुल, फिजूल खर्चा। सिंपल वर्ड है स्पेंड, थ्रिफ्ट या वेस्टफुल आप बोल सकते हैं। ये फर्स्ट वोकैबुलरी है। चलिए सेकेंड, ये है सेकंड। देखिए वैक्स, वैक्स का मतलब कवर और ट्रीट समथिंग विद वैक्स। मोम सिमिलर वर्ड है ग्रीज या लुब्रिकेट आप बोल सकते हैं। ये सेकंड वैक्स, वैक्स। उसके बाद देखिए वरिड। वरिड का मतलब होता है ट्रबल अबाउट एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम, चिंतित होना। सिमिलर वर्ड है डिस्टर्ब्ड या ट्रबल भी आप बोल सकते हैं। थर्ड वोकैबुलरी वरिड, वो सेकंड, ये था और फर्स्ट। सो इधर 3 वोकैबुलरी और रीडिंग हम प्रैक्टिस किए हैं, तो आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू और बाय।